Halo guys, selamat datang di video gue lagi. Sebelumnya gue mau mengucapkan turut berduka cita karena banyak banget public figure di India yang meninggal di tahun ini gitu kan. Mulai dari kemarin artis TikTok yang baru 18 tahun, terus Sarah Khan, terus artis dari Kanada, terus yang terakhir kemarin Jack Deep. Kita benar-benar banyak kehilangan public figure di India tahun ini. So, seperti biasa sebelum lanjut kalian bisa like, subscribe, dan juga follow Instagram gue di @IamMegaMay. Kalian bisa nanya apapun di situ. Jadi jangan lupa seperti biasa duduk yang nyaman, nikmati popcorn, dan jangan kemana-mana because it's in the time with Mega May. Jadi di video-video gue yang sebelumnya itu banyak banget yang komen dan gue sebenarnya baca semuanya tapi emang nggak sempet balas satu persatu gitu kan. Dan ada satu komen yang minta buat di-review atau dijabarin tentang apa yang diomongin sama Kangana Ranaut dalam videonya yang viral setelah kematian Sushan gitu. Gue ngerasa tertantang banget lah pastinya karena kalian ada yang berminat dan ini bermanfaat banget gitu. Tapi gue harap kalian gak ada yang request kayak gini lagi, please, karena susah banget buat translate-nya, harus hati-hati banget gitu. Meskipun gue udah nemu translatean versi bahasa Inggrisnya, tapi kan gue harus make sure kalau translatannya itu bener. Dan gue rasa apa yang diomongin sama Kangana Ranaut ini mungkin mewakili apa yang dirasakan Sushan selama ini gitu ya. Karena mungkin dia nggak bisa ngomong, ditumpahin sama Kangana dalam videonya. Tapi so sorry banget kalau misalkan translatannya itu atau terjemahannya kurang sempurna karena gue juga masih belajar gitu. Tapi gue rasa apa yang gue translatein ini udah mewakili apa yang diomongin Kangana Ranaut. Jadi nanti ada 2 video, masing-masing video itu kurang lebih 2 menit. Setelah masing-masing video gue bakal review beberapa poin-poin yang mungkin masih jadi pertanyaan buat kalian. Oh iya, satu lagi, gue pengen tahu gimana reaksi kalian atau perasaan kalian setelah kalian nonton trailernya Dil Becara. Kalian bisa review di bawah karena jujur gue sendiri gue ngerasa kayak oh my god, Sushan still here. Gue masih ngerasa Sushan ada di sini pas gue nonton trailer film itu. Jadi kalian bisa review di bawah. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek video Kangana Ranaut yang pertama. सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। Poin pertama yang ada di video Kangana Ranaut tadi adalah tentang orang-orang yang nganggep Sushan itu lemah. Dan Kangana sangat-sangat gak setuju tentang ini. Kenapa gitu kan? Karena pertama kita tahu kalau Sushan ini pernah dapat beasiswa di Universitas Stanford. Kalau kalian tahu Universitas Stanford ini salah satu universitas terbaik di dunia loh, di dunia gitu kan. Saingannya Oxford, Harvard gitu. Dan waktu itu Sushan menolak beasiswa ini. Oh my god, bayangin, menolak, ditolak. Beasiswa dari universitas terbaik di dunia ini ditolak sama Sushan karena dia mau mengejar karirnya atau mengejar impiannya sebagai aktor gitu.
meskipun waktu itu belum aktor sih, dia masih jadi penari latar atau backing dancer gitu. Selain dia pernah dapat beasiswa dari Universitas Stanford, dia juga pernah dapat peringkat 7 waktu masuk ke perguruan tinggi teknik Delhi. Jadi ini salah satu perguruan terbaik di Delhi, di India maksudnya, di Delhi gitu. Delhi atau India lah, terserah itu. Nah, waktu itu Sushan pada tahun 2003 dia masuk universitas ini dan dia dapat ranking 7 dari semua yang masuk gitu. Hebat kan berarti kan dia. Tapi sayangnya dia nggak selesai kuliah di situ. Dia keluar pas semester akhir, kalau nggak salah semester 6. Jadi pas bersamaan dia keluar itu, dia dapat tawaran beasiswa di Stanford tadi. Dia menolak beasiswa dari Stanford, dan dia juga keluar dari Universitas Delhi tadi buat mengejar karirnya sebagai penari latar. Jadi waktu itu katanya ada perempuan yang ketemu sama Sushan, dan perempuan itu bawa Sushan ketemu, namanya tuh Shimak Davar. Jadi Shimak Davar ini salah satu koreografer di India, semacam Saroj Khan atau Farah Khan. Shimak Davar ini emang terkenal di India, salah satu karya-karyanya yang terkenal itu koreografinya di film Rabni Bandhan di Jodi, terus Doom 2 sama Dil To Pagal Hai. Oh my god, Sushan milih buat jadi penari latar daripada melanjutkan pendidikannya. Dan kalian tahu, setelah Sushan keluar dari universitasnya dan memutuskan untuk jadi penari ini, dia ternyata tinggal di satu ruangan yang isinya itu 7 orang. Salut. Terus poin kedua ini adalah ketika Sushan ngerasa diabaikan di industri perfilman Bollywood. Jadi sempet ada wawancara gitu, dan Sushan ngomong kalau kenapa sih orang-orang nggak bisa nerima gue gitu, kenapa sih gue itu kayak diabaikan. Jadi dia ngerasa kayak gitu. Terus ada juga dalam screenshotan di Instagramnya, dia komen-komen, dia kan aktif banget ya, Sushan ini aktif banget komen-komenan sama followersnya. Terus dia bilang kalau ayo dong tolong tonton film gue gitu, kalau enggak nanti gue bakal ditendang keluar dari industri perfilman gitu. Tapi waktu itu sebenarnya pakai emoticon bercanda gitu, tapi nggak tahu, mungkin dia sebenarnya emang merasakan yang sebenarnya. Dan di situ Sushan bilang kalau gue tuh nggak punya godfather di Bollywood ini. Yang kita tahu kalau misalkan godfather dalam istilah yang kita tahu kan itu semacam ayah baptis gitu kan. Artinya kayak orang yang diberi tanggung jawab lebih untuk melindungi kita selain orang tua kita, intinya kayak gitu. Sama sepertinya di dunia Bollywood ini, mereka harus punya godfather atau punya sandaran lah ibaratnya. Jadi ketika ada apa-apa kalian ada tempat pulang, ada tempat ngadu gitu. Tapi Sushan ini nggak ada, dibanding star kid yang lain udah pasti punya backingan kuat lah di belakang gitu. Kalau ada apa-apa ada yang nolongin. Dan menurut Kangana seharusnya Sushan ini punya masa depan yang cerah kalau dilihat dari rekam jejak karirnya, dimana dia itu debut pertama di Bollywood itu filmnya Kai Po Che. Dan Kai Po Che ini termasuk film yang sukses besar dibandingkan dengan debutan star kid yang lain gitu kan. Karena Kai Po Che ini kalau gue lihat di Wikipedia, dia penghasilannya itu 3 kali lipat dari budgetnya dibandingkan dengan Student of the Year atau Kedarnas yang nggak terlalu sukses gitu. Dan tentang Gully Boy kita udah ngebahas di video sebelumnya, yang gimana Gully Boy dapat banyak banget penghargaan gitu kan. Tapi di sini gue ada tambahan sedikit aja, kalau sebenarnya Chichore ini sebenarnya punya 2 nominasi di Filmfare, satu sebagai film terbaik dan juga sebagai sutradara terbaik, tapi sama sekali nggak dapat penghargaan di salah satunya. Poin yang ketiga adalah adanya istilah insider dan juga outsider di dalam Bollywood. Jadi insider itu kayak orang-orang yang berasal dari dalam, orang dalam lah insider. Outsider itu orang luar. Orang dalam itu ya orang-orang yang emang dari keluarga artis, dari keluarga sutradara, produser kayak gitu. Orang luar ya orang-orang kayak Sushan, kayak Kangana, kayak gini. Nah, jadi menurut Kangana tuh kenapa sih kita yang outsider ini nggak punya kesempatan gitu kan? Nggak punya kesempatan sama kayak mereka. Kenapa kita outsider ini selalu aja diancem, selalu aja dibuat stres, selalu aja dibikin khawatir gitu? Karena Kangana sendiri bilang dia pernah mengalami ini, mulai dari dia dapat SMS yang ngancem lah gitu. Terus filmnya dibilang flop, padahal filmnya super hit gitu kan. Hal-hal kecil kayak gini tuh kadang tuh emang bikin orang ngerasa stres, kepikiran gitu, overthinking. Jadi kan mungkin hal yang sama juga terjadi dengan Sushan kan, karena
menurut Kang Ana ini, beberapa media itu menggambarkan Sushan ini sebagai sosok yang psikotis, neurotis, terus pecandu. Jadi psikotis itu istilah penyakit gangguan kejiwaan yang dimana penderitanya itu nggak bisa ngebedain antara kenyataan sama khayalan, jadi semacam halusinasi gitu loh. Dan beberapa media itu pernah memberitakan kalau Sushan ini sering mendengar suara-suara bisikan sebelum kematiannya. Jadi itu menggambarkan Sushan itu seorang psikotis. Sedangkan neurotis ini adalah istilah gangguan kejiwaan di mana penderitanya itu sering rasa cemas, emosi, depresi. सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आप को के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई, मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई, ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता है 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गए, मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी। Kalau di video kedua ini ada istilah yang disebut Kang Ana sebagai systematic dismantling of a fragile mind. Jadi ini kondisi ketika seseorang atau orang lain berusaha merusak pikiran kalian sedikit demi sedikit. Jadi nggak langsung boom dirusak gitu, nggak, tapi sedikit demi sedikit. Jadi biar terkesan kalian sendiri yang salah, kalian sendiri yang stres gitu. Bisa mungkin dengan cara bikin kalian ngedown atau mencemarkan nama baik kalian, biar kalian tuh depresi, terus stres, mungkin sampai bunuh diri gitu kan. Pokoknya sampai pikiran kalian tuh bener-bener rusak deh. Dengan cara apa sih orang-orang ini melakukan systematic dismantling ke Sushan atau merusak pikiran Sushan ini? Jadi ada beberapa media-media yang melakukan blind items ke Sushan. Dalam istilah media, blind items itu semacam gosip yang sebenarnya tuh belum tentu benar gitu, tapi cuma dibuat-buat aja gitu loh. Beda dengan hoax ya. Kalau hoax itu kadang nggak jelas, dibuat tapi nggak jelas atas dasar apa gitu, atau enggak emang itu udah pasti palsu. Tapi kalau blind items ini kadang tuh lebih masuk akal, tapi belum tentu kebenarannya tuh kayak gitu. Ada beberapa contohnya yang diomongin Kang Ana tadi, mulai dari berita yang pertama yang dibacain oleh Kang Ana tadi, kalau Sushan ini digambarkan sebagai orang yang narsistik. Narsistik itu sangat mengagumi dirinya sendiri secara berlebihan gitu, karena dia sering dengerin lagu-lagunya dia ketika dia berhubungan intim. Terus yang kedua ini, Sushan ini digambarkan sebagai mirip supir truk.
yang maksudnya apa sih, nggak jelas gitu kan. Terus yang ketiga itu ada juga media yang sempat nulis tentang Sushan, dimana dia pernah mukul kepala seorang sutradara dengan botol kaca. Ini menunjukkan kalau Sushan itu seorang yang neurotis, yang kayak gue bilang tadi, dia cemas, gampang emosi gitu kan, padahal belum tentu kayak gitu. Yang paling parah emang yang terakhir ini sih, berita yang ngomongin kalau Sushan ini sempat melecehkan Sanjana Sanghi waktu mereka syuting di Jodhpur buat film Dil Becara. Tapi ini udah ditampik sama si Sanjana sendiri kalau dia nggak pernah ngelakuin kayak gitu, Sushan maksudnya, dan sutradara juga bilang nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Kayak gimana gitu kan. Ya gue sendiri juga nggak percaya si Sushan melakukan kayak gitu. Untuk berita-beritanya sendiri gue nggak nemu sih, mungkin karena udah berita lama atau nggak pernah diupload ke media online-nya kali ya. Jadi gue nggak nemu beritanya, gue cuma nemu berita yang terakhir tadi tentang Sanjana Sanghi. Jadi seperti yang gue bilang di video gue selanjutnya, ketika gosip ini terjadi ke orang-orang yang diberitakan secara blind items oleh media-media ini, media tersebut nggak bakal nyebutin nama orang itu dan dideskripsikan secara penuh kayak yang Kang Na bilang. Jadi ketika hal ini terjadi, orang tersebut nggak bisa menuntut media tersebut secara hukum atau secara legal karena namanya nggak disebutin gitu. Jadi pihak kepolisian mungkin juga kayak bisa aja yang dimaksud bukan kamu. Karena ini sempat terjadi sama Kang Na sendiri, dimana dia pernah mengalami istilahnya mental, emotional, psychological lynching. Jadi dia kayak dikeroyok secara bertubi-tubi gitu loh mentalnya sama media-media di India gitu. Dan ketika Kang Na ini mengajukan tuntutannya itu kayak ditolak, terus tiba-tiba orang yang diminta bantuan hilang gitu aja. Kemana? Oh my god. Jadi tadi semua pengalaman Kang Na sendiri yang mungkin sama-sama dari outsider ya. Mungkin selama ini Sushan juga mengalaminya tapi nggak pernah mengungkap. Jadi menurut gue, nepotisme ini sama kayak apa yang dikatakan oleh teori kemiskinan, dimana kemiskinan itu ada udah sejak lampau dan akan terus ada sampai kapan kita nggak tahu. Sama, nepotisme kayak gitu. Kita nggak tahu nepotisme ini udah ada sejak kapan, dan menurut gue nepotisme ini bakal terus terjadi sampai kapanpun, tapi dengan skala yang berbeda, entah itu skala yang besar atau skala yang kecil. Karena bayangkan aja, ketika kalian jadi orang tua, kalian punya usaha, merintis usaha, udah sukses, usahanya gede gitu kan, terus kalian punya anak, pasti kalian mewariskan usahanya ke anak-anaknya dong. Kalian mengutamakan keluarga kalian, kalian juga pengen anak-anak kalian senang. Kalau dilihat secara mendalam, sebenarnya nepotisme ini adalah hal yang wajar menurut gue. Yang nggak wajar adalah ketika orang-orang dalam ini menolak dan tidak menghargai talenta-talenta baru pada diri orang lain. So, kalau kalian punya kekuasaan, silahkan kalian gunakan kekuasaan itu sebijak mungkin. Kalau mau nyenengin keluarga, ya silahkan, tapi jangan sampai nggak menghargai orang-orang dari luar golongan kalian. Oke, itu tadi videonya Kangana Ranaut dan juga reviewnya dari gue. Kalau misalkan kalian masih ada yang mau ditanyain, kalian bisa komen di bawah. Dan sorry banget kalau misalkan translatannya masih berantakan, namanya juga masih belajar. Jangan lupa kalian review ya trailernya Dil Becara di komen. Gue pengen banget tahu gimana reaksi kalian terhadap video itu. Apa sama atau gue doang yang ngerasa kayak gini gitu kan. Oke, makasih kalau gitu udah nonton video gue. Have a nice day and bye.